Hello everyone, I am Assistant Professor Jayendra Patel from Mechanical Engineering Department, Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. In this video of Indian Constitution, we are going to learn the 11th topic of Indian Constitution, that is parliamentary form of government in India. So let us start with the very basics. There are basically two forms of democratic government system on the basis of nature of relationship between the executive and the legislative. Okay, and those two classifications are the parliamentary form that is available in the India as of now and the presidential form of government, and the best example of this type of government is the USA government. Now, apart from these two systems, there can also be a third kind of system which is known as the hybrid system, incorporating the features of both the systems. Now, if we talk about the chief difference between these systems, the chief difference is the power separation between the legislative, executive and the judiciary organs. And the another major difference between both the system is the accountability of the executive to the legislature. Okay, so let us quickly go through the basic difference between both the systems, the parliamentary as well as the presidential system. Now, starting with the parliamentary system of the government is the one in which the executive is responsible to the legislature for its policies as well as the acts. But on the other hand, in the presidential system is the one in which the executive is not that responsible to the legislature for its policies and its act. And one more thing, actually in the presidential system, the executive is constitutionally independent of the legislature in respect of its term of office. So एक तरीके से बोला जाए तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होती है उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स पैरेलली वर्क करते हैं, दोनों में कोऑर्डिनेशन जरूरी है. ओके, बट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर हम दोनों ऑर्गन्स की बात करें तो दोनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट होते हैं. एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अलग होता है, यानी कि जो लॉस को एग्जीक्यूट करता है और सो रन करता है वो एक ऑर्गन अलग होता है, और जो लेजिस्लेचर है यानी कि जो लॉस बनाता है वो ऑर्गन अलग होता है. Now, talking about the another difference, the parliamentary government is also known as the cabinet government, or we can say it is a responsible government, or the third name of the same is the Westminster model of the government. Okay, हम तीनों चीजें अलग से सीखेंगे. Talking about the presidential system is also known as the non-responsible type of government, or we can say the non-parliamentary form of the government, or say fixed executive system of the government. Clear? So these are the three names of the presidential system of the government. Other than that, अगर हम countries की बात करें तो basically in the Britain, Japan, Canada and India we can see the parliamentary form of government, and in the countries like USA, Brazil, Russia and Sri Lanka we can see the presidential form of the government. So as of now, this was the very basic difference between both the system. Now, after understanding the features of the both governments, we will try to distinguish between both governments in depth once again. Okay, but as I told you, as of now, let us go towards the meaning of the names of these things: cabinet government, responsible government and the Westminster's model. Now, what do you mean by those things? Now, if you talk about very first name, the cabinet system, this name was given by Sir Ivor Jennings, जिसका फोटो आप यहाँ पे देख रहे हो. He was basically a British lawyer and a leading expert on the constitutional laws. Okay, and as per him, the system of the parliament is known as the cabinet system because the cabinet is the nucleus of power in a parliamentary system. So basically पूरा का पूरा जो concentration होता है वो cabinet पे होता है. Clear? Now, second is known as the responsible government. Now, why the parliamentary government is known as responsible government? Because the cabinet, which is also known as the real executive, is actually accountable to the parliament and stays in the office as long as
इट हैज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि जिस पार्टी के पास मैक्सिमम मेजोरिटी रहेगी वो मेजोरिटी वाली पार्टी कैबिनेट में रहेगी जब तक उसके पास मेजोरिटी वोट्स है, यानी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। क्लियर? नाउ द थर्ड नेम इज द वेस्टमिंस्टर्स मॉडल. Now, this is because of the location of the origin of the parliamentary system. Now, the origin of the parliamentary system was done in the British Parliament. Okay, so very first of the parliamentary system was in the British system. Clear? So that's why we say the parliamentary government also as the Westminster model. Now, in recent periods, the Prime Minister's power and the influence as well as the position has increased significantly, and that's why in recent times the political analysts have described the British system of the government as the prime ministerial government also. Okay, so चौथा भी नाम है, that is also known as the prime ministerial governments. Now, if we talk about the Indian government, the Constitution of India provides for the parliamentary form of government at both levels, that is the central level as well as the state levels. Okay, and article number 74 and article number 75 of Indian Constitution deals with the parliamentary system at the center, and article number 163 and 164 of the Indian Constitution deals with the same in the states. Okay, so states में भी parliamentary system है as well as the center में भी parliamentary systems है. Now we have cleared the basics. So let us go towards the features of both the system. We will start with the parliamentary government systems. Very first and the very basic feature of the parliamentary system is the nominal and the real executives. Now in the parliamentary system there are two types of executive. Very first is the nominal executive and second is the real executive. Now the president of India or say president of any parliamentary system is known as the nominal executive. He is also known as the titular executive, titular. Okay, now if we talk about the India, Sir Ramnath Kovind is the president of India, so he is the titular executive of the India. We can also say he is the head of the state or say head of the India, or the another name is the first person of India. He is the first person of India. Now, while the Prime Minister of India is the head of government, clear? And he is known as the real executive of India, clear? So, here once again revising, the president is the head of state and the prime minister is the head of government. Now, as per the article number 74, actually the council of ministers is there, which is headed by the prime minister of India. Now, what they basically do, they basically gives aids and advices to the president of the India, who is the nominal executive. And the advices offered by PM is basically binding on the president. Clear? So this is all written in the article number 74. The second feature is the majority party rules. Means the political party which secures the majority seats in the Lok Sabha elections, he forms the government. Further, the leader of the party is appointed as the prime minister by the president, and further other ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister. Okay. However, when no single party gets the majority, then the coalition of parties are invited by the president to form the government. ओके, सो बेसिकली कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, कई बार नंबर्स ऑफ पार्टीज अवेलेबल होती है, तो प्रेसिडेंट दो पार्टी या फिर दो से ज्यादा पार्टीज को इनवाइट करती है फॉर द कोलिजन, वो कंबाइनली गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करती है. नाउ एज ऑफ नाउ इफ यू टॉक अबाउट द करंट सिनारियो, देयर आर टोटल 302 members in the BJP and there is a coalition of government, and as of now in the government there are total 333 seats available. Okay, so government जो रन कर रही है वो basically majority के साथ यानी कि 333 सीट्स के साथ रन कर रही है. मेन पार्टी है बीजेपी जिसके पास 302 सीट्स है, बाकी के उसके सपोर्टर्स है. उसके अलावा देयर इज एन ऑपोजिशन अवेलेबल. द मेजर
of them is INC, the Congress Party, which is having 51 सीट एंड बाकी के उसके सपोर्टर्स है यानी कि ऑपोजिशन के सपोर्टर्स है. क्लियर. उसके अलावा वी आर हैविंग नॉन अलाइंड प्लेयर्स ऑल्सो यानी कि टोटल 115 सीट्स अवेलेबल है जो कि नॉन अलाइन प्लेयर्स है, वो किसी भी पार्टी में अलाइन नहीं है. और एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग टोटल 4 सीट्स एम्प्टी. क्लियर. सो दिस इज द रिकॉर्ड एज पर द September 2020 and this is just for the information purpose. The next important feature is the collective responsibility. Now this particular collective responsibility principle is the bedrock principle, or we can say it is the base of the parliamentary government system. The article number 75 of Indian Constitution says that the ministers are having the collective responsibility to the parliament. Now parliament in general, but specifically if we talk, it has the responsibility towards the Lok Sabha specifically. Okay, so if we talk about the collective responsibility, the whole team, now team में कौन कौन से लोग आएंगे? The complete ministry यानी कि सभी के सभी मिनिस्टर एज वेल एज द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, वो सभी आ जाएंगे. ओके, सो एज द पार्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दे स्विम टुगेदर यानी कि सभी चलते हैं तो सभी कंटिन्यूसली चलते रहेंगे. और दे सिंग टुगेदर यानी कि कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है वो सभी को रिजाइन देना पड़ेगा. नाउ फॉर दैट देयर इज अ स्पेसिफिक मोशन कॉल्ड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस motion in the Lok Sabha. Now, what do you mean by the vote of no confidence motion? Now, a no confidence motion is moved by the Lok Sabha if he or she feels that the government in power is not functioning properly. In that particular case, the members of the Lok Sabha demand for the resignation of the whole government. और अगर 50 से ज्यादा लोग, okay, remember that 50 से ज्यादा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के सपोर्ट में आते हैं, इन दैट केस द डिबेट स्टार्ट्स एंड द हाउस इज पुट टू द वोट वेयर द रूलिंग गवर्नमेंट हैज टू प्रूव इट्स मेजोरिटी. और अगर रूलिंग गवर्नमेंट मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती है, इन दैट केस द होल गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन. Now currently on the screen you can see the history of the no confidence motion. It has been passed several times. कई बार लोग जीतते भी थे, कई बार लोग हारे भी थे, even by the single vote. Okay, in the 1999 the Vajpayee government has lost the no confidence motion by just a single vote. Okay, उसके अलावा 2003 की बात है, 2008 की बात है. उसके अलावा अगर रिसेंटली बात करें तो 2018 जुलाई की बात है जब मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुई थी, बट दे वॉन द ट्रस्ट ऑफ द लोकसभा. और अगर आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ज्यादा जानना है तो राज्यसभा टीवी की यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा जो कुछ ऐसा दिखता है, जिसका लिंक आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं. ओके, दिस इज कंप्लीटली जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पज. Now let us move towards the next feature, which is actually the political homogeneity. Now usually the members of the council of minister belongs to the same political party. Okay, so it is a single party rule and that's why they share the same political ideology. So conflict होने के chances सबसे कम होते हैं. Clear? But many times it happens there is a कोलिजन ऑफ द गवर्नमेंट. जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, इन दैट पर्टिकुलर केस कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं यानी कि मोर देन 2 पार्टीज कम्स टुगेदर एंड दे क्रिएट अ गवर्नमेंट. एंड नाउ इन सच केसेस द मिनिस्टर्स आर बाउंडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन. ओके, यानी कि सभी के ओपिनियन लेने होंगे और जिसकी ओपिनियन की मेजोरिटी ज्यादा होगी उसके एक्शन को फॉलो किया जाएगा. Clear? So this is one of the features. Other than that, there is a next feature called double membership. Now, the ministers are the member of both the legislature and the executive. Clear? Legislature basically क्या करता है? Laws बनाता है और executive क्या करती है? Laws को implement करती है. So, जब भी parliamentary system में ministers select होते हैं तो वो basically legislative के भी organ होते हैं और executive के भी organ होते हैं. Now, इस particular thing से और एक बात clear हो जाती है कि any person who is not the member of parliament cannot be the minister. Now the same thing is confirmed with the parliamentary system. Our constitution stipulates that a minister who is not the member of parliament for the period of 6 consecutive months ceases to be a minister.
यानी कि जो पर्सन 6 महीने से कंटिन्यूअसली एमपी नहीं होगा वो मिनिस्टर नहीं बन सकता. दिस इज अ सिंपल थिंग. क्लियर? नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट फीचर, द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. Now the Prime Minister plays the leadership role in the system of the government. Clear? He is the leader of the Council of the Minister very firstly. Then he is the leader of the Parliament also, and he is the leader of the party in power also. So he is the leader of 3 different things. So ultimately we can say that he plays the very important and highly crucial role in the functioning of the government. The next feature is the dissolution of the lower house. The lower house of the parliament, or we can say the Lok Sabha, can be dissolved by the president on the recommendation of the prime minister. So this is possible by the recommendation of prime minister. If we say in the other word, the prime minister can advise the president to dissolve the Lok Sabha before its expiry term. Okay, normally term क्या होता है, 5 years के terms होते हैं, but if the prime minister recommends, then it can be dissolved. The Lok Sabha can be dissolved before the 5-year terms. And अगर एक बार लोक सभा डिसॉल्व हो जाती है तो नेक्स्ट ऑप्शन बचता है न्यू इलेक्शंस का. नाउ इस पर्टिकुलर फीचर से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. क्लियर? जो पर्टिकुलर थिंग आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने नहीं मिलेगी. द नेक्स्ट फीचर इज द सीक्रेसी. द मिनिस्टर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द secrecy ऑफ प्रोसीजर एंड कैन नॉट रिवील एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनी प्रोसीडिंग, पॉलिसीज एंड द डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट. नाउ दे टेक द oath of secrecy before entering the office, and the oath of secrecy to prime minister is administered by the president. Clear? Basically president prime minister को 2 टाइप की ओथ दिलवाता है. The very first oath is the oath of office, okay, and the second oath is the oath of secrecy. ये दोनों ही ओथ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज. ओके, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स को हम क्विकली चेकआउट कर देंगे क्योंकि हम अभी जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज द पार्लियामेंट्री फीचर्स. ओके, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स को आपको जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि आप क्लियरली डिफरेंस समझ सके बिटवीन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम. दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग द फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, द पोजिशन ऑफ द हेड. नाउ वी विल लर्न एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट. ओके, हम सभी जगह पे अमेरिकन सिस्टम की बात करेंगे ताकि हमें इजी हो सके दोनों को समझना. नाउ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द बोथ हेड ऑफ द स्टेट ऑल्सो एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. ओके, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या था कि हेड ऑफ स्टेट अलग था, हु वाज नोन एज द प्रेसिडेंट, एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग था, हु वाज नोन एज द प्राइम मिनिस्टर. क्लियर? नाउ एज द हेड ऑफ द स्टेट, the president of US occupies the ceremonial position, and as the head of the government he leads the executive organ of government. Okay, I am talking about the executive organ only. So we can say that the legislative is basically separated from the executive part in the presidential system. जब हम इंडियन पार्लियामेंट की सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हार्मनी होती है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव पार्ट एज वेल एज द लेजिस्लेटिव पार्ट. दोनों ही सिस्टम कंबाइंड होती है. यहां पे सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन प्रेसिडेंट के हाथ में होता है. क्लियर? सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज. द सेकंड मेजर फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज द इलेक्शन. नाउ ओवर हियर द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल और बाय द इलेक्टोरल कोलाज. In the US, the presidents are elected by the electoral college. Okay, this is one kind of the election system. Now, it has a fixed tenure of 4 years if we talk about the US system. So, he cannot be removed by any kind of vote of no confidence in the legislature.
जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेजिस्लेचर को हटाया जा सकता है बिफोर इट्स टेन्योर, बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, इट कैन नॉट हैपन. सो इफ यू टॉक अबाउट द यूएस, द कांग्रेस कैन नॉट रिमूव द प्रेसिडेंट यूजिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. ओके, जब भी कोई मेजर इम्पीचमेंट होगी, यानी कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा, इन दैट केस ओनली द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड. क्लियर? नाउ ओवर हियर यूएस में आपने कई बार सुना होगा द कांग्रेस. ओके, सो व्हाट इज द कांग्रेस इन टर्म्स ऑफ द यूएस? नाउ द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस इज बेसिकली द टू लेजिस्लेटिव बॉडीज. हमारे यहां पे जैसे लोकसभा और राज्यसभा होती है, वहां पे भी होते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द सेनेट. नाउ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सेनेट दोनों को कंबाइन करो तो उसे कंबाइनली बोलते हैं कांग्रेस. ओके, कांग्रेस इज नॉट द पार्टी इन द यूएसए. सो क्लियर? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड फीचर, which is the cabinet system of the presidential organ. Now in the presidential system, the president governs with the help of the cabinet, or say smaller body called as the kitchen cabinet. Now it is only a basic advisory body and it consists of non-elected departmental secretaries. That means we can say that all the departmental secretaries are appointed by the president. They are only responsible to the president, and if the president wants, he can remove any of the secretary at any time. Now over here there is a big limitation comes in the parliamentary system. Now in the parliamentary system, prime minister has no complete authority to select any person as a minister. हमारे प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ एमपीज में से ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम. नाउ कंटिन्यूइंग, द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर बेसिकली नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एनी काइंड ऑफ द एक्ट. कांग्रेस इज हु, बेसिकली ही इज द लेजिस्लेचर बॉडी. क्लियर? सो executive body has no responsibility towards the legislature. Clear? Secondly, they neither possess the membership in the Congress, यानी कि legislature, nor attend its session. Continuing towards the next features, the president cannot dissolve the House of Representative, the lower house of Congress, यानी कि Senate. Okay, so president has no authority towards the legislature. That's why he can also not dissolve the any house of the Congress. Clear? And lastly, generally the president has the power to pardon or commute judicial sentences awarded to the criminal. So this is one of the most common thing. And secondly, the president can veto acts by the legislature. So these were some of the features of the presidential system. So now we have understood the features of both the systems, so we can understand the merits and the demerits of our parliamentary system. So let us start with the merits of parliamentary system. So very first merit is the harmony between legislature and the executive. The greatest advantage of the parliamentary system is that it ensures the harmonious relationship and the cooperation between the legislative and the executive organs. The executive is also the part of the legislature. At the same time, both are interdependent at the work. That's why there are very less chances of conflict between both the organs. Secondly, we are having a responsible government system. So by its very nature, the parliamentary system establishes a responsible government. The ministers are responsible to the parliament in all of their act because they are answerable to the parliament. The parliament exercises the control over ministers through the various devices like the question hours, the discussion sessions, the adjournment motions, as well as the no confidence motion. Okay, so this is the whole day in the parliament. Okay,
दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवर्स देखने को मिलेंगे जहां पे ऑपोजिशन पार्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करती हैं टुवर्ड्स द करंट रनिंग गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट हैज टू आंसर दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। The next merit of the parliamentary system is it prevents the despotism. Now, what do you mean by despotism? The तानाशाही जिसको हम बोलते हैं, which is basically the exercise of the absolute powers. Okay. Now, under the parliamentary system, the executive authority is vested to the group of individuals. Okay, there will be numbers of ministers who controls this particular authority. It is not in the hand of a single person. And due to this distribution of the authority, यानी कि dispersal of authority reduces the dictatorial tendencies. Moreover, the executive is responsible to the parliament for their any kind of work, and it can be removed by the no confidence motion also. Okay, so he has to be responsible towards the government. The another major merit is the already available alternative government. So in case of the ruling party loses its majority, the head of the state can invite the opposition party to form the government, and this means that the alternative government can be formed without any kind of fresh election. So we will have the continuous government system available in the center, and that's why Dr. Ivor Jennings says that the leader of the opposition is the alternative prime minister. The next merit is the wide representation. Now, in the parliamentary system, the executive consists of group of individuals, यानी कि numbers of ministers are there who are the representative of peoples of different areas. So, it is possible to provide the representation to all the section and regions in the government. And the prime minister, while selecting this thing, okay, जब प्राइम मिनिस्टर उसके मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करता है, he can take this particular factor into the consideration, यानी कि सभी एरियाज कवर हो सके. Clear? So these are the major merits of the parliamentary system. Now let us go towards the major demerits of the parliamentary system. No doubt there are numbers of advantages available, but there are also numbers of demerits available जिसके कारण parliamentary system कई बार सिलेक्ट नहीं की जाती है. Very first demerit is the unstable government. Now over here the parliamentary system does not provide the stable government. This is one of the most important demerit. In the merit section we have seen that the parliamentary system is the रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि वो हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है, बट एट द सेम टाइम वो हमें एक अनस्टेबल गवर्नमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है. क्लियर? सो दिस इज वन इज द मेजर मेरिट एंड सेकंड इज द मेजर डीमेरिट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड द अनस्टेबल गवर्नमेंट. क्लियर? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनस्टेबल गवर्नमेंट? इट इज नो गारंटी दैट द गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेन्योर. नॉर्मली इंडिया में कितने साल का टेन्योर है? 5 years का टेन्योर है. सो दिस इज नो गारंटी कि कई गवर्नमेंट्स 5 साल तक भी टिक पाती है. ओके, उससे पहले ही गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ता है. नाउ कौन कौन से सिनेरियोज होते हैं? बेसिकली सबसे पहला सिनेरियो हो सकता है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, यानी कि पार्टी मेजोरिटी प्रूव करने में फेल हो जाए. सेकेंड थिंग होती है द पॉलिटिकल डिफेक्शन, पॉलिटिकल इश्यू आ सकते हैं. एंड थर्ड थिंग हो सकती है द एविल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोलिजन्स. नाउ कई बार ऐसा होता है कि 2 से ज्यादा पार्टियों ने मिलके गवर्नमेंट क्रिएट की होती है. ओके, यानी कि मल्टी पार्टी कोलिजन होता है. इन दैट पर्टिकुलर केस चांसेस हैं कि दोनों के बीच में ना बने और दोनों पार्टीज अलग अलग हो जाए. इन दैट पर्टिकुलर केस गवर्नमेंट बिकम्स द अनस्टेबल गवर्नमेंट. एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पार्लियामेंट सिस्टम हैज विटनेस्ड it numbers of time. These are numbers of examples available. You can see that Morarji Desai government starting from the 1977 कितने साल टिकी? 2 साल और 126 days. उसके अलावा गुलजारीलाल नंदा only 13 days. चरण सिंह गवर्नमेंट 170 days. अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट okay in the 1996 it has stayed only for the 16 days. कई गवर्नमेंट ऐसी है वो जो साल तक भी नहीं टिकी है. You can see that. okay, और कई गवर्नमेंट ऐसी है जो
कंप्लीट एक महीने तक भी नहीं टिके हैं. सो दिस ऑल आर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज. यू कैन सी ऑल दिस थिंग. दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम. So this is the major demerit that we are having the unstable government. Let us go towards the next demerit, the no continuity in the policies. Now the tenure of government is 5 years. So the parliamentary system is not conducive towards the formulation and the implementation of the long term policies. नाउ कई पार्टी को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो 5 साल से ज्यादा टिक पाएंगी. कई बार तो ऐसा भी होता है कि 5 साल के अंदर ही पार्टी गायब हो जाती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कई पार्टी शॉर्ट टर्म पॉलिसी यानी कि 5 साल या फिर 7 साल की ही पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने की ट्राई करती है. लॉन्ग टर्म पॉलिसीज में वो नहीं पढ़ना चाहते. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिमेरिट्स. और कई बार ऐसा भी होता है कि जब रूलिंग पार्टी चेंज होता है, when the ruling party changes, it is followed by the changes in the policies of the government also, and there are numbers of example available, okay, or previously also and nowadays also. If we talk about the historical data, the Janata government headed by the Morarji Desai in 1977 reversed a numbers of policies of its previous Congress government, and at the same way the same thing was repeated by the Congress government when they come back into 1980s. और ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही बार हुआ है. And this is the historical data, and also we are having numbers of recent data available. This is just for the information purpose. Okay, मैं किसी भी गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, just understand the details. Clear? कई बार ऐसा भी हुआ है, the recent details जिसमें मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं कि ये सेम चीज हुई है, लेकिन यहां पे कई बार जो प्रीवियस पॉलिसीज थी उनको कैंसिल कर दिया गया या फिर उनको मॉडिफाई किया गया, और कई बार सिर्फ नाम को चेंज करके उन पॉलिसीज को फिर से इंप्लीमेंट किया गया है. लाइक दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट, द मनमोहन सिंह सरकार में जो पॉलिसीज अवेलेबल थी, जो कि चीजें अवेलेबल थी, सभी योजनाएं मॉडिफाई की गई है, नेम चेंज किया गया है या फिर कैंसिल की गई है, और उन्हीं योजनाओं को अलग तरीकों से रिप्रेजेंट किया गया है. नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिमेरिट, द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट. नाउ many times when the ruling party enjoys the absolute majority in the parliament, the cabinet becomes the autocratic and exercise nearly the unlimited powers. That is why it is very necessary that we must have a strong opposition party. And this is not just a theory. Dr. Ramsay Muir, who was the former British Prime Minister, also complained for the dictatorship of the cabinet. And this phenomenon was also witnessed during the era of Indira Gandhi and the Rajiv Gandhi. The next major demerit is it is against the separation of the power. Now, in the parliamentary system, the legislature and the executive are together and they are not separable. Clear? The cabinet acts as a leader of the legislature as well as the executive also, as we talked earlier, so that the whole system of the government goes against the spirit of the theory of separation of powers. It is not necessary कि by separation of power is actually a major demerit, but separation of power demerit कब हो जाएगा, जब एक complete party pure majority में आ जाती है in the parliamentary session और opposition party weak हो जाती है. Now in that particular case क्या होगा कि complete party rule करती है इंडिया पे, और as well as same time पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों कंबाइंड होते हैं. सो वो एंजॉय करेगी कंप्लीट डिक्टेटरशिप टुवर्ड्स द इंडिया, ओके, विच इज गोइंग अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम. ओके, वो बेसिकली कंप्लीट डेमोक्रेटिक सिस्टम रही ही नहीं. सो दैट्स व्हाई separation of powers sometimes becomes very necessary, and this is one of the major demerits in the parliamentary system. Now let us go towards the next demerit, which is the government by the amateurs. Now why we say the government by the amateurs? Because most of the time ministers that are elected are not that much expert in those field. Clear? Secondly, when we talk about the prime minister has the limited choice for selecting the other ministers. जो ministers कैबिनेट में होंगे, जो मिनिस्टर लोकसभा में होंगे, उन्हीं मिनिस्टर को
प्राइम मिनिस्टर ऐड कर सकते हैं इन द कैबिनेट। उसके अलावा जो लोग उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है उनको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि भाई वो लोग एमपी बने ही नहीं हो। क्लियर? सो दिस इज अ बेसिक लिमिटेशन। As well as the minister has to give lots of their time in the parliamentary work as well as the cabinet meeting and the party activities also. Okay, so there is a time limitation also. That's why we say that the government is formed by the amateurs also. So these are the major demerits of the parliamentary system. Now the question में arise कि भाई इतने सारे demerits हैं तो हमने parliamentary system को adopt ही क्यों किया? Clear? So there are numbers of reasons of adopting the parliamentary system. The very first reason is the familiarity with the system. Now the constitution makers were somewhat familiar with the parliamentary system as it had been operational in India during the British rule. Okay, जब भी British rule था तब हमने parliamentary system को ही follow किया था और कई लोगों ने parliamentary system को ही देखा था. And K.M. Munshi, who was Indian activist and member of Constituent Assembly, यानी कि संविधान सभा के वो member भी थे, he particularly argued that for last 30 or 40 years, some kind of responsibility has been introduced in the governance of the country. Our constitutional tradition have become parliamentary, and after this experience, why should we go back and buy a novel experience? So के.एम. मुंशी के हिसाब से अगर हमें पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस है ऑलरेडी तो हम नई सिस्टम क्यों इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें? क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द रीजन टू इंप्लीमेंट द पार्लियामेंट्री सिस्टम. द सेकेंड रीजन, द प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ ओवर हियर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, who was the member of the Constituent Assembly, pointed out in the Constituent Assembly that a democratic executive must satisfy two conditions. One is the stability and second is the responsibility. Now, unfortunately, it has not been possible so far to devise a system which can ensure both in equal degrees. Very first, the American system gives more stability but less responsibility, and the second is the British system, in other hand, gives more responsibility but less stability. And the draft constitution is recommending the parliamentary system of executive has preferred more responsibility over more stability. डॉक्टर बी आर अंबेडकर के हिसाब से जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रिकमेंडेशन में लिखा है कि भाई हमें मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, और सेकेंडली अमेरिकन गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट स्टेबिलिटी कम है. सो अल्टीमेटली एज पर अवर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मोर प्रेफरेबल. The next is the need of avoiding legislative and executive conflict. Now the framers of constitution wanted to avoid the conflict between the legislative and the executive, which are bounded to occur in the presidential system, okay, which is prevalent in USA. हमने presidential government system में already एक चीज देखी है कि भाई executive and legislative totally separate होती है तो conflict होने के chances ज्यादा रहते हैं. But in the parliamentary system, as they are connected together, the legislative executive conflicts are very less or say very rare. So basically constitution framers ने सोचा कि जो एक नया बना हुआ लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सरकार है, उस सरकार में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच दरार या फिर झगड़े, संघर्ष या फिर कोई खतरे की आशंका नहीं होनी चाहिए और उसका जोखिम हम नहीं उठा सकते हैं. Okay, that's why they wanted a form of government that would be conducive to the manifold development of the country. So basically country के development के बारे में ही सोचे ऐसी सरकार उनको चाहिए थी, and that is the major reason why they selected the parliamentary form of the government. Next, the nature of Indian society.
Now, India is one of the most heterogeneous state. The most complex plural societies are actually living in the India. इंडिया में कई ऐसे समाज है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से बसते हैं. Now, for that particular thing, India must have a type of government which has the greater representation of the various sections. And the parliamentary system offers the greater scope for giving the representation to the various sections, interests and regions in the government. And that's why we are having the parliamentary system that promotes the national spirit among the people and builds the united India. So these were the basic reasons why we are having the parliamentary system. Now, as I told you previously, let us compare the parliamentary system and the presidential system in depth. So we are going to see the in-depth comparison between the parliamentary system and the presidential system. Now, in terms of the features, the parliamentary system is having the dual executives. As I told you, there is a nominal representative and second is the real representative. Okay, two executives are there. One is the president and second is the prime minister. When the presidential system has the single executive, this is only president. President basically state को भी represent करता है और executive को भी represent करता है. Secondly, in the parliamentary system, the majority party rule is there. When it comes to presidential system, the president and legislature are selected separately for fixed terms. The third major difference in terms of feature, the parliamentary system has the collective responsibility, जो कि combined कमिटी बनी है जिसको हम कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री बोलते हैं, वो मिनिस्ट्री की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर. नेक्स्ट, in the parliamentary system there is a political homogeneity, but in the presidential system the political homogeneity may not exist. Okay, may not exist, that means it is not necessary. Then in the parliamentary system we are having the double membership system. Okay, यानी कि जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव दोनों में ही इनको मेंबरशिप मिलेगी. बट इन द प्रेसिडेंट सिस्टम द प्रेसिडेंट इज हैविंग अ सिंगल मेंबरशिप, यानी कि एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप ही मिलेगी. Talking about the next feature, the parliamentary system has the leadership of the prime minister. But in case of presidential system, there is a domination of the president, यानी कि president ही highest power होगा. In the parliamentary system, lower house को after certain time period dissolve होना पड़ेगा. But in case of the presidential system, no dissolution of the lower house is there. Finally, in the feature section, there is a fusion of power in the parliamentary system. यानी कि एग्जीक्यूटिव जुडिशियल सिस्टम कंबाइनली वर्क करेगी. देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर, मिक्सिंग होगा. एंड व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव सिस्टम अलग अलग काम करेगी. अदर देन दैट, इफ यू वांट टू डिस्कस, देयर इज अ फिक्स टेन्योर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. ओके, फिक्स टाइम होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए हमारा प्रेसिडेंट वर्क करेगा. बट देयर इज नो फिक्स टेन्योर ओके इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. अगर कैबिनेट को नो कॉन्फिडेंस मोशन से पास किया गया या फिर कोई भी इश्यू हो गया, इन दैट पर्टिकुलर केस देयर आर चांसेस कि 5 साल से कम में भी उनको रेजिग्नेशन देना पड़े. सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंस. अदर देन दैट, अगर हम प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट की बात करें तो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्राइम मिनिस्टर को एमपीज जो बनते हैं उनमें से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना कैबिनेट. बट इन दैट पर्टिकुलर केस ऑफ presidential system, now a president can select peoples outside of the legislature also. So these were the basic difference in the features. Now let us talk about the merits and the demerits. Okay, अब यहाँ पे जो presidential system के demerits है वो same parliamentary system के merits हो गए and the vice versa, यानी कि जो presidential system के जो merits हो गए वो parliamentary system के demerits हो गए. So let us talk about the merits of the parliamentary system. Now very first, there is a harmony between the legislature and the executive in the parliamentary system. Now when it comes to presidential system, there is a conflict between legislature and the executive because दोनों ही independent है. Second difference, there is a responsible government. Okay, parliamentary system हमको responsible government provide करती है, but in the presidential system we are having the non-responsible government. Thirdly, there is a
prevention of the despotism in the parliamentary system. Okay, and in the presidential system it may lead to the autocracy. And finally, in terms of merit, there is one difference. In the parliamentary system there is a wide representation due to all Lok Sabha MPs, and in terms of presidential system there is a narrow representation. Clear? Now let us talk about the demerits of the parliamentary system, which are actually the merits for the presidential system. Now in the parliamentary system the गवर्नमेंट इज एक्चुअली द अनस्टेबल गवर्नमेंट को 5 साल से कम टाइम में भी जाना पड़ सकता है. हमने एग्जांपल में देखा कि कई गवर्नमेंट 13 या फिर 16 डेज में भी चली गई थी. व्हेन इट कम्स टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम दैट इज अ स्टेबल गवर्नमेंट. ओके, जब तक टेन्यूर होगा तब तक गवर्नमेंट चलेगी. सेकेंडली, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज इज देयर. ओके, 5 साल की गवर्नमेंट होती है, इसलिए मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट चाहती है कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज ही बनाए, और कई बार गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसीज भी अपडेट हो जाती है. ओके, बट इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज अ डेफिनेट नेट इन द पॉलिसीज. Third demerit in the parliamentary system is the separation of the power. Parliamentary system is against the separation of the power. But in the presidential system, the base is actually the separation of the power. वहाँ पे executive और legislative अलग है, that is the base of the presidential system. Clear? So which is one of the merit in the presidential system. And lastly, the demerit of the parliamentary system is the government by amateurs. Okay. वहाँ पे एक लिमिटेशन होती है, जिस लिमिटेशन के जरिए एमपीज को ही सिलेक्ट करना पड़ता है इन द कैबिनेट. ओके, और वो लिमिटेशन के साथ हम कह सकते हैं कि भाई देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ एमेच्योर्स. बट इन टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि प्रेसिडेंट उसके अंडर में एक एडवाइजरी कमिटी सिलेक्ट करता है जो कि एक्सपर्ट्स की कमिटी होती है, जो सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Clear? So this is the major comparison between the presidential system and the parliamentary system. So this is the end of the comparison, and the main intention of that particular topic was that कि आपको आइडिया आ जाए कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है, दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, और इंडिया में स्पेसिफिकली हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही इंप्लीमेंट क्यों किया है. So I am ending my lecture over here. See you in the next lecture. Till then, keep learning and have a good day.